Good morning students. I hope you are fit and fine at your homes. So students, today we are going to start our next topic, that is setting page orientation, and today date is 27 June 2020. So here what is orientation? Orientation is the direction of the text on the page. So there are two types of orientation, portrait and landscape. यहाँ से देखने में क्लियर हो रहा है, portrait means our text is shows as a lengthwise, and in the landscape our text is in the form of widthwise. So according to our requirement we can set the portrait orientation or landscape orientation. So to change the paper orientation, follow the given steps. Select the page layout tab. Firstly you have to select the page layout tab and click on the orientation button in the page setup group. Page setup group के अंदर आपने क्या क्लिक करना है? Orientation. So choose the landscape orientation from the drop down list. Observe the change. आप landscape choose कर रहे हो, then your text will be shows as a landscape, means widthwise. Next we have that is the setting paper size, means जो आपका पेपर, जो आपने पेपर प्रिंट करवाना है उसका आपने साइज़ क्या रखना है. जैसे A4 साइज़ होता है शीट का, A2 साइज़ होता है, ऐसे काफ़ी सारे साइज़ होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं. सो इन Microsoft Word you can work with different sizes of paper, though the available selection depend on the type of printer you use. So to set a paper size, select the page layout tab, click on the size button in the page setup group. मैं आपको यहाँ से क्लियर करवाती हूँ कि कैसे आप चूज़ कर सकते हो. As you can see, this one is your page layout tab, and after clicking on this page layout tab you have to choose this size button to change the paper size. So after choosing size button, a list of paper size option appears. This one dialog box will appear. The current paper size is highlighted in the drop down list. Select any desired page size option. The paper size of the document changes accordingly. आप यहाँ से देख सकते हो कि by default कौन सा paper size is selected. It is A4 size is selected. Here A4 size is selected by default, but if we want to change the paper size, then we can click on this drop down arrow. So at last we have to click on this OK button, और हम height and width भी change कर सकते हैं by using this spin arrows, and at last we have to click on OK button. Next we have that is working with tabs. So जो टैब होती है, ये हमारा कीबोर्ड पे एक बटन होता है टैब, जिसकी हेल्प से हम क्या है, जैसे अगर हम कर्सर यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट के बाद जो कॉमन लिखा है इसमें क्या है, थोड़ी सी स्पेस है, तो ये क्या है, हम कर्सर को मूव कर देते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, तो कर्सर ये जो एक स्पेस है उसने जो कर्सर ने वो लीव कर दिया है. ऐसे ही अगर हम टैब यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैंने M लिखा है और उसके बाद मैंने B राइट करना है, अगर मैं कर्सर यूज़ करूँगी तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ेगा और साथ में B राइट करेगा. बट इफ़ आई एम यूजिंग टैब देन इट विल लीव मल्टीपल कर्सर स्पेस एंड देन इट विल राइट B. मीन्स थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस छोड़ता है एज कंपेरेटिव टू cursor. So the most common way to indent the text is to use the tab key. It is used to move the cursor at certain spaces in a document. By default tab stops are set at every 0.5 inch. By default tab जो बटन है वो क्या छोड़ता है, 0.5 inch space it will leave. So if we want to set the tab settings, then we have to click on the dialog box launcher button in the paragraph group of the page layout tab. Page layout tab पे paragraph group we have to choose, then the paragraph dialog box will open. Now click on the tabs button present on the lower left of the dialog box. The tabs dialog box appear on the screen. तो जो tab dialog box appear होगा screen पे, आप यहाँ से you can set here tab stop position, means कितनी space में आप उसको stop करवाना चाहते हो. By default it will be selected as 0.5, but if you want to change you can change here according to your requirement. So type a tab position and text and then click on the OK. Now press the tab key. The cursor will jump to the next position where you have set the tab stop. तो हमने वहाँ 1.25 सेट किया है, तो 1.25 इंच की वो क्या करेगा, स्पेस छोड़ेगा. So similarly set a new tab at 3 if you want to select as a 3, and at last you have to click on the OK. So at last your topic is indenting text. So indentation determine the amount of spacing between the text and the page margin. तो आप यहाँ से देख सकते हो, this one space is called indentation, that is a space between the page margin
एंड द टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है और जो पेज मार्जिन है उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन. So if you want to increase or decrease the indentation, then we have to follow these steps. Select the text to be indented. Firstly we will select the text जिसको हमने indent करना है. Then click on the increase indent button in the paragraph group on the home tab. Home tab पे paragraph group के अंदर we will choose increase indent because we want to increase the indent. So the selected text will shift ½ inch away from the left margin. If we will select increase indent, then our text will be shifted away. थोड़ा दूर जाएगा हमारा जो टेक्स्ट है, बट कितनी दूर जाएगा, दैट इज़ ½ inch it will move. So click on the decrease button, indent button to move the text ½ inch closer to the left margin. अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वो किसके क्लोज आएगा, मार्जिन के क्लोज आएगा, लेफ्ट मार्जिन के क्लोज आएगा. So there are two type of indentation, increase indent and decrease indent. So class 5th, your lesson number 3rd, advanced features of word processor has finished now. So take care students, have a wonderful day.